Good evening and welcome. You're watching our election coverage right here on NDTV. Our team in Uttar Pradesh has been crisscrossing through the length and breadth of this state, this massive, huge state with a population of 24 crores. This state which is perhaps bigger than many countries. And in various phases, elections are being held. Imagine the mammoth task of choosing a government in a state like this. 2 phases over, 5 more to go. So we started our journey from Greater Noida, went to Aligarh, then to Deoband, Saharanpur, Muzaffarnagar, Swar, Rampur, Bareilly, Shahjahanpur, Kasganj, back to Rampur for the election coverage, then Karhal, which is Akhilesh Yadav's seat from where he's contesting, and then our journey to Kanpur, the city, the industrial hub called Kanpur, via Kanpur Dehat. Now, it'll be incomplete if you talk about Kanpur and not talk about Kanpur rural. So, we got you reports from the city and also reports from the rural pockets of this district. What are the people saying there? What are the people saying here? What are the youth saying in both these places? That is very significant. So on this program, let's first quickly begin by playing out this conversation with the youth of Kanpur, the city. What is on their mind? And will that necessarily affect voting patterns? I spoke to them just a short while ago. Let's listen into that conversation. So as you can see, there is this poster right here, banner which says Smart City Kanpur. This is also the place, very centrally located place in Kanpur, where the metro is coming up. But what do the youth in Kanpur feel? What are their issues? Do they feel Vikas, development is their issue? Is there actually development? Or does the Samajwadi Party have an edge in their mind? Let's talk to them. Thank you very much for joining us. I would like to talk to you first. Your name? Himani Agarwal. Himani, what according to you is the big issue for citizens of Kanpur? Sir, I believe we are a country of youth, and speaking from the perspective of a youth, I would say the biggest issue right now is unemployment, because many graduates, they are just roaming around and they are not having employment, and once they take out their voice, they are beaten. We have seen so many incidents, not only in Uttar Pradesh but the country as a whole. So they are beaten, their voices are not heard. We feel that we are not heard, and atrocities are being done on us. So I think the biggest issue from my point of view, from the youth point of view, is unemployment. Apart from that, lack of health facilities, mehengai, berozgari, it's all there. But unemployment is there because it ultimately... But Himani, my larger question is, unemployment figures have remained pretty much, minus the aberration of COVID, unemployment figures have always been where they are, right? Secondly, you talk about bad health facilities. We know that on many indices in Uttar Pradesh, healthcare facilities have been poor in the past also. So do you think that this is a general apathy over the years by all successive governments, or a function of the last 5 years? Sir, I believe, as you've already pointed out, that the indices have already been there. But when a country is stuck with a pandemic, a greater responsibility is bestowed upon the shoulders of the government that is at present. Either you wouldn't have had promised, but if you would have promised and you have the that confidence of the government and they have chosen you, then it is upon you to take out the measures. Especially, I feel the lack of health facilities. Other states, they were able to cope up with it, but Uttar Pradesh as a government, I think it has failed, and the major issue of health facility was not catered properly. Secondly, migrants. Uttar Pradesh being an industrialist area, industrialist city, people were... Kanpur, you mean? Kanpur, I meant. Yeah, just to correct, Kanpur being the industrialist area, so many industries are there. People were not having employment, they were not having places to eat, they were not having proper health facilities. So I believe unemployment is the major concern, apart from health facilities, since the COVID is going. So that would be not an issue in the later run. But unemployment will always be there, and it has always been there. Okay, what's your name? Pradeep Kumar Yadav. Pradeep Kumar ji, you tell me, what is the biggest issue according to you? आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा सर बेरोजगारी। इस समय देखा जाए तो कोविड और महंगाई के देखते हुए बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है सर, कि आप देखिए यूपी में तो सबसे ज़्यादा इस समय
पर डे आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगार बच्चे, पर डे कंटिन्यू। देखिए 4.5 साल में ये जो हमारी गवर्नमेंट चली है, तो सरकार तो कह रही है हमने नौकरियां दी। सर कोई वैकेंसी नहीं। जो वैकेंसी दिए हैं कौशल प्रशिक्षण के तहत ये लोग करा करके, वो वैकेंसीज मात्र बच्चे गए हैं और छोड़ करके चले आए हैं। वहाँ कंटिन्यू कभी जॉब किए ही नहीं। ये लोग करते क्या है, प्रशिक्षण करा के दिलवा दिए 15,000 पे। वहाँ करती क्या है, कंपनियाँ शोषण करने लगती हैं। उनको ट्रेनिंग के दौरान 5,000 8,000 देने लगती हैं और ट्रेनिंग करने के बाद फिर उनको जो है छोड़ देते हैं, तो बेचारे फिर छोड़ के चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय है। आप देखिए हम लोग कंटिन्यू, अभी मैं लाइब्रेरी से पढ़ के चले जा रहा हूँ, तो 4.5 साल में कोई विज्ञप्ति नहीं दिए हैं, और जो दिए भी हैं उनको आज तक कोई फाइनल नहीं कराए हैं, और कराए भी हैं तो कोई पेपर लीक, कहीं कैंसिल हो गया, कहीं जो है रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। 2016 की वैकेंसी जो निकली थी उसकी 2018 में एग्ज़ाम कराए हैं, 2020 में आंसर की दिए हैं। अब पता नहीं 2022 में उसका रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। आप देखिए वीडियो वैकेंसी निकली थी, बोले बहुत पारदर्शिता से हुई, सब कुछ हुआ, बशर्ते उसका क्या हुआ जो है आज तक रिजल्ट ही नहीं आया। फिर पता चला पेपर लीक हो गया, फिर से फॉर्म डाला। चुनाव में इसका असर पड़ेगा बहुत बड़ा सर। मेन मुद्दा बेरोजगारी का इस समय प्रेजेंट टाइम में जितना यूथ है, युवा है, एकदम गुस्साए बैठा है। आप देखिए अभी इलाहाबाद में कितना बच्चों के ऊपर लाठी डंडे पड़ा है, पुलिस ने मारा है। लखनऊ में देखिए पर डे केवल बेरोजगारी पे सबसे ज़्यादा हम लोग इस समय बेरोजगारी पे नाराजगी है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कहा यह जाता है कि जब से ये सरकार आई है थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है। दूसरी तरफ आप इस तरीके की बात भी सुनते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा बहुत बेरोजगार है। तो क्या चुनावी मुद्दा कानून व्यवस्था होना चाहिए या बेरोजगारी होनी चाहिए या दोनों होने चाहिए? ऐसा क्यों है कि एक पार्टी एक ही चीज़ दिखाती है? देखिए सभी होने चाहिए। नज़रिया हमारा होना चाहिए। नज़रिया का कहने का मतलब यह है कि यदि 100 के दीदार हैं तो नज़र पैदा कर। उसका मतलब ये होता है जनसंख्या जब तक आप कंट्रोल नहीं तो करेंगे। ये सदन में बार बार बात उठी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने इसका सदैव विरोध किया है। क्यों किया है? केवल वोट बैंक के लिए। इन्होंने कुछ नहीं है देखा। इन्होंने जनसंख्या देखिए, आपको लगता है कानून से ही रुक सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई अगर आप एजुकेशन बेहतर होगी तो अपने आप जनसंख्या, ये हमने देखा है इतिहास में। जैसे नीतीश कुमार हैं, उनका ये कहना है कि जो सबसे बढ़िया तरीका है जनसंख्या कम करने का वो है कि आप एजुकेशन फैलाइए। एजुकेशन कानून ला के आप क्या करेंगे? कानून लाना बहुत जरूरी है। कानून लाने से जो हमारी जो वैकेंसी और शोषण होगा? कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये नजरिया केवल विपक्ष का है। विपक्ष केवल सदैव सत्ता पक्ष पे सवाल ये खड़ा करता है कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कतई कोई भी भ्रष्टाचार नहीं। ऑन दिस पोजीशन ऑफ अ लॉ फॉर पॉपुलेशन, जो भी सरकारी कंपनियों ने अभी टीजीटी के पेपर में, यूपी टेट वाले पेपर में घोटाला किया था, वो सभी जेल में है। आप पता करिए ना, आप पता करिए। दोबारा पेपर हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई। हाँ। तो ऐसा नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ होते हैं। आपका जवाब ये जो इन्होंने बात की है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कानून आएगा तभी कुछ स्थिति बेहतर होगी, इस पर आप क्या जवाब? हम ये कहेंगे अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पे कितना भी आप रूल कानून बना दीजिए, अगर शिक्षित आदमी नहीं है जो रोड पे घूम रहे हैं, कितने लोगों को उन्हें पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाएगी। जब तक हमारा समाज सोशल पढ़ाई लिखाई में नहीं बढ़ेगा तब तक पॉपुलेशन कंट्रोल पे लाख आप नियम कानून है। तो बच्चों को आज तक संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता लगा वो डिग्री ले लिए हैं, पीजी तक कर लिए। तो शिक्षा कराइए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ये आपका कहना है। जी, मैं अब और लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप शहर में काफ़ी समय से हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है कि कौन जनता को ज़्यादा ये समझा पाया है, कन्विंस कर पाया है कि वो सही है? देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जनता का बहुत अच्छे से, क्योंकि वो प्रचार और प्रसार में जो हैं वो बहुत आगे हैं, बहुत फास्ट हैं। क्योंकि अभी वर्चुअल हो गया था तो वर्चुअल में भी वो बहुत पहले से ही कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी अपना प्रचार प्रसार करती है और एक ही एजेंडा लेके चलती है, तो हमें लगता है कि उस तरीके से बीजेपी अपनी बात को काफ़ी हद तक, हर एक प्रचार करने में काफ़ी हद तक आगे है। और अपना मैसेज भी उनका, क्योंकि कोई विकास की बात नहीं है, कोई रोजगार की बात नहीं है, कुछ नहीं है, जो उनका एक अपना एजेंडा है। जैसे कि जब सूबे के मुखिया ही कह दें कि 80 और 20 की हमारी लड़ाई है, और देश का प्रधानमंत्री भी अगर वैसी ही बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एजेंडा क्या है। तो इस तरीके से अगर बात करी जाए तो
कहीं भी बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, विकास की कोई बात नहीं है। जबकि अगर मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर में 10 विधानसभा में 7 विधानसभा सीट जो है बीजेपी जीती थी 2017 में। उसके बाद कानपुर के हालात आप खुद आए हैं और यहाँ पे आप खुद देखें कि कानपुर के क्या हालात हैं। और जबकि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी थी, तो कानपुर के हालात एकदम बदल जाने चाहिए थे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये मैनचेस्टर कहा जाता था, यहाँ पे तमाम टेनरीज थी, तो वो टेनरीज भी आप यहाँ पे देखें काफ़ी टेनरीज यहाँ बंद करवा दी गई। ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे, गंदे पानी के नाम पे, गंगा सफाई के नाम पे तमाम ट्रेनियाँ बंद हो गई। जो ट्रेनियाँ यहाँ से पलायन करवा दी गई, जो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई, बाहर शिफ्ट हो गई, जिससे बेरोजगार यहाँ और कानपुर का बढ़ गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अपना जो एजेंडा है उसका वो साफ है और वो साफ लेके चलती है। और यहाँ तक कि युवाओं के माइंड में भी उसने काफ़ी हद तक अपने एजेंडे को फिट कर दिया है ताकि युवा भी उसी की तरफ है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। What according to you is the biggest issue? The biggest issue according to me is the unemployment. That is due to because of COVID and महंगाई बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। नहीं, पर ये मुद्दा देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो हो गया ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक चीज हो जाएगी कि इस मुद्दे पर मैं वोटिंग कर रहा हूं और फैसला ले लूं। ये दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम अलीगढ़ में थे, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मिले मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने कहा हम समाजवादी पार्टी से बहुत नाराज हैं, ऐसे लग रहा है ऐसे हमारा यूज़ किया है। फिर जब सवाल पूछा गया कि वोट किसको देंगे, तो कहते हैं वो तो अलायंस को ही देंगे। तो नाराज़गी भी है लेकिन उम्मीद भी है। तो इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी, महंगाई ज़रूर है, बट डू यू थिंक दैट दिस विल बी इनफ टू शिफ्ट द वोट अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट? इज दैट एंगर सो मच? Yes, according to me this will be enough to shift the vote to any other government. According to me this government is not able to do what is required. मतलब they didn't took the actions that is needed to remove this unemployment and बेरोजगारी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सो दीज वर द यूथ ऑफ कानपुर who seem to articulate what is on top of their mind. Is that going to be enough to be able to exert some amount of influence on voting patterns? That will be very interesting to see. All right, so you heard the youth of Kanpur City. What is on the mind of people, the youth, the farmer, the unemployed, in the rural pockets? Remember, Kanpur has two districts. One is Kanpur and the other is Kanpur Dehat. They are two separate districts. So in Kanpur Dehat, the district, it has a totally different set of issues. The main center, which is called Akbarpur, barely a few kilometers away, about 50 or 60 kilometers away from Kanpur City. But you would notice, once you listen to this conversation, of a sort of a verbal altercation between two set of beliefs in rural pockets of this state. That number one, how informed the voter is, and number two, how strongly their mind is made up. Of course, it was sprinkled with a few outsiders from Rajasthan also. It was a fun conversation. We recorded it in the afternoon. Let's play it out for you. तो कानपुर है, कानपुर का माहौल है, और कानपुर में आते ही एक पान भी मैंने खा ही लिया। तो यहाँ कुछ राजस्थान से लोग आए हैं और उन्होंने हमारी गाड़ी रोक करके ये पूछा कि सरकार किसकी बन रही है। आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है चुनाव में? आ रहा है ना हमारे को। सरकार तो देखो अभी बब्बर शेर है योगी जी, तो लग तो ऐसे रहा है कि वापस सरकार उन्हीं की आएगी। हाँ। और ये हमारे मित्र हैं, ज्यादा नॉलेज इनको है, राजनीति में इंटरेस्ट है। हम तो सब जगह फील्ड का दौरा कर रहे हैं। हाँ। जहाँ हम पानी का काम कर रहे हैं, पानी की टंकी का। हाँ। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह माहौल मतलब पेचीदा तो है, लेकिन टक्कर में कहीं कहीं योगी जी हमको पूरा देख रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो बाहर के जो लोग हैं उनका कहना है योगी जी, स्थानीय लोग जिनको वोट देना है उनकी बात भी सुन लें। बताइए, राजस्थान वाले कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये तो गलत है। यहाँ पे तो अखिलेश यादव की टक्कर है और किसी की नहीं है। जो हमको वोट देना है तो अखिलेश यादव की ही देना है। सुना आपने? आप जिता रहे हैं योगी को? नहीं, हमने जो देखा है ग्राफ, हम पूरे यूपी में घूम रहे हैं पानी की टंकी बनाने के लिए, तो हम देख रहे हैं जहाँ लोकेशन ज्यादा मिल रही है हमको योगी जी का मिल रहा है, बीजेपी का। और कौन बोलना चाहेगा? जी आप बताइए। ये सरकार ने किया क्या है 5 साल में?
व्यापार सब खत्म हो गए, व्यापार बचा नहीं है, हैं? और कोई विकास हुआ नहीं है, हर आदमी परेशान है और किसान आदमी ज़्यादा परेशान है क्योंकि सारी फसल जो है सब नष्ट हुई जा रही है, हैं? ये सरकार में क्या मिला है? 5 साल में कोई रोजगार तो मिला नहीं है, व्यापार खत्म हो गया है। बताइए। देश की सरकार आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्यों लगता है कि वो इनसे बेहतर होंगे? क्योंकि एक बात ये कही जाती है, इधर आइए, एक बात ये कही जाती है कि कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के टाइम पे ज्यादा दुरुस्त था। आप मानते हैं इस बात को? अरे कानून व्यवस्था इनके टाइम पे क्या सही है? कितने अपराध बता दे, क्या गिनवा दें हम? अभी मुकदमे लिखते हैं भैया, झूठी मुकदमे, फर्जी। आप किसी को कुछ नहीं कहोगे फिर भी मुकदमे लग जाएंगे। और रैली के लिए जा रहे हैं सबके सब। अखिलेश यादव की रैली के लिए ट्रैक्टर भर के जा रहा है। तो यहाँ माहौल देख करके तो आप कुछ और नहीं माहौल कुछ क्या और है कि ये तो ऑलरेडी क्या है कि गढ़ है अखिलेश जी का, और गढ़ में वो जीत रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन भाई जी अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे और प्लस योगी जी आए थे, सारे नेता भी आए थे। उनकी जितनी भीड़ होगी उससे 6 गुना एक्स्ट्रा अखिलेश जी को होगी, आप देख लेना चल के। हाँ, ये पक्का वादा, आप पता चल जाएगा जान कहाँ पे है। पूरी सुनामी आई है अखिलेश जी की, सुनामी चल रही पश्चिम से लेकर। सरकार में क्राइम, बलात्कार के अलावा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी। सुनामी आई है, सुनामी। 1% भीड़ नहीं इसमें भाई साहब। जो हमारे योगी मोदी जी में भीड़ थी वो 1% नहीं इसमें भीड़ है। ये जितने ट्रैक्टर से डीसीएम से बस से जा रही, ये सब 200 रुपए 300 रुपए में ये सब जा रहे हैं किराए के। हाँ, किराए के टट्टू हैं, टट्टू हैं। 200-300 क्वार्टर, कहीं मछली कहीं मुर्गा, इसीलिए वो जा रहे हैं। एक ही बाजार में अलग अलग बातें, कुछ नहीं है। कोई दोस्तों यहाँ पर बहुत ही थोड़ी भीड़ हुई थी, प्रधानमंत्री जी आए तब भी थोड़ी भीड़ हुई थी यहाँ पर। प्रधानमंत्री हर जनपद 100 रुपए में आए थे सारे लोग, मुझे पता है। 100 हम बोल रहे हैं, जो हम ना किसी के बिके हुए, ना 100 रुपए में, ना 500 रुपए। ये सब 200 रुपए वाले हैं। जो सुनो, महीने में 2 बार राशन दे, सुनो 1 मिनट, मैं बिका नहीं किसी का। जो महीने में 2 बार राशन दे, कॉलोनी घर दे, लेटरिंग दे और पूरी भावनाता से हर चीज करे, तो वो ही अच्छा इंसान, समझे? और कोई नहीं अच्छा नहीं। खा गए सब खा गए। और फौज की भर्ती क्यों नहीं हो रही है? एक भी भर्ती नहीं आई। हम नौजवान कोरोना कहाँ गया? बेरोजगार फौज की भर्ती क्या? की बात अलग होती है, नहीं होती, रैली की बात अलग एक बात तो कह लें, थोड़े होता है। कोई भैया कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है, अपनी बात। अब तुम लड़ने आ गए क्या? लड़ोगे तो लड़ते रहो भाई, अकेले जीते हो। आदमी की भैया 3 साल से 5 से 5 किलो राशन मिल रहा था, राशन पहले नहीं मिल रहा था, उसके बाद क्या लेना देना है? भर्ती लेना जाना ही है। बेरोजगारी घूमन सब जान, बेरोजगारी घूमन सही है। एक सेकंड आप आइए, एक सेकंड रुक जाइए। आपने अपने सवाल पूछ लिए। अब देखिए, इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। युवा है, बेरोजगार है, नौजवान, वो कह रहे हैं भर्ती नहीं हो रही। सुन लेते हैं ना, अभी आपने सवाल पूछ लिया, अब सुनिए। आज हमको भी बता दे, 5 साल हो गए। अब तुम बोलने नहीं दोगे क्या कि लड़ने आए क्या? ऐसा है बेटा, तुम लोग भी यहीं के होगे, बाहरी नहीं हो, ठीक है? सब अरे भाई, एक दूसरे को धमकाओ नहीं भाई, एक दूसरे को धमकाओ नहीं। मंत्री जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। अन्ना जानवर कितना राशन खा रहे हैं? खेतों में 12 बजे तक हम लोग 12 बजे रात तक ताक रहे हैं। 20 किलो अच्छा, अब उनको बोलने दो। अब वो बोल तो दें। किसी के हैं कि हम मोदी जी के हैं जानवर,
घर के तुम्हारे जानवर हैं। तुम लोग छोड़ देते हैं जानवर, अपना बांध के रखो ना। दूध तो ही नहीं, छोड़ दी नहीं, दूध तो ही नहीं। चलिए, ऐसा है राजस्थान वालों, देख लो गर्मा गर्म बहस चल रही है। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि बाबा परचम लहराएगा, भगवा 10 तारीख को आएगी 100%। आप तो बाबा की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर आपका मत होता तो आप मताधिकार भी कर दे सकते थे। किसानों को रौंदने वाले मंत्री जी ये बहस तो अब उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी। द यूथ ऑफ द सिटी and the youth of Kanpur Dehat, Kanpur rural. The one thing that you have to admire about the people of this state, that even if it is the back of beyond, the political understanding is so astute, so sharp. They know exactly what to expect from their politicians. They know exactly how to question. They will also know who is their ward pramukh, block pramukh, their MLA, MP, and to hold that person accountable. Politics runs in the veins of people in this state. The best part about the coverage today was that not one person, whether from the Samajwadi Party, the BSP, or even the Bharatiya Janata Party, even mentioned anything to do with Hindu-Muslim hate politics. And I think that is a very, very good thing to happen now in these phases. That on the ground, the hate rhetoric is not in question. What is in question is a track record, and what is being answered is also questions on that track record, and perhaps patting themselves on the back on this impression that Yogi Adityanath means great law and order in the state. All right, speaking of law and order, now something happened in Ghaziabad in Uttar Pradesh today, where the police was seen beating women wearing hijab. They were seen beating the women with sticks. Now this video has emerged from 3 days ago, which has gone viral now. The video is of the police beating the women wearing hijab. The women have accused of a scuffle during a demonstration in the hijab case, and the police is investigating this entire video. Now, this hijab controversy may be happening in Karnataka, but now there's a protest in Ghaziabad. This has become an election issue also. We saw in Western UP a lot of people talking about the hijab controversy. Many Muslim women saying that this is actually because of elections that this issue has been brought in. Let's get in a voice who has been vocal on many issues related to Muslims. I have with me Mr. Arif Mohammad Khan, the Governor of Kerala. Thank you very much, Mr. Khan, for joining us on this very important issue. My first question to you is, what is your view? What do you think about the entire hijab controversy? I very strongly feel that this is not a controversy. This is a conspiracy, a sinister design to push back the Muslim, particularly the young girls and Muslim women who, after the abolition of triple divorce, they are feeling liberated. They are having a sense of freedom. They are pursuing their education. They are joining great careers. This is a conspiracy. To the argument which is being given is that they are asking it in the name of religion. In India, we have the freedom of religion, and there are so many things which people claim that it is part of the religion. But Supreme Court has laid down the test whether any practice about which you claim protection under Article 25, whether it is essential, intrinsic, and integral to the practice of faith. Now, Islam is a religion of book. The religion itself has described in detail what is essential and what is not essential. Now, according to Islamic books, there are only 5 essential features which are called
Arkan-e Islam. And these 5 are, first is affirmation of faith through kalima. Second is salat, that is prayer at regular intervals. Third is fasting during the month of Ramadan. Fourth is charities, zakat. Our jurists, they have prescribed 2.5% of your wealth to be given annually. Although Quran talks about zakat, but it does not prescribe 2.5%. In fact, if you look at it closely, Quran says, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. They ask you, which means Holy Prophet, how much to spend. قُلِ الْأَفْوَى. Say to them anything and everything above your own personal requirements or needs. But the jurists have decided 2.5%. It's fine. And the fifth feature, essential feature, which has been laid down is Hajj, which is not applicable to everybody. Only persons with resources who can afford to travel to Makkah and Medina, on them it is obligatory. I do not think you, anybody else, me, have the right either to make an addition to this list or a deletion from there. So the essential test, when you will apply the essential test, then this argument that this is part of the religious freedom, no. Supreme Court has said that only essential features which are intrinsic and integral to the faith, to the practice of the faith, will receive protection under Article 25. And hijab is definitely not one of them. No, Arif Saab, I understand what you're saying. And by the way, for those who do not know, Arif Saab is actually from Uttar Pradesh and he's the governor of Kerala. Arif Saab, I understand what you're saying and I don't doubt your knowledge about Islam. I dare not. But the point is, and the question is of choice. Don't you think that this is now becoming more or less about choice and more about dictation? That a woman is being told what to and what not to wear? Of course, I totally agree. Everybody is free to wear or not to wear whatever they desire. There cannot be any dispute about it. Here the question is very limited. When there are so many institutions and diversity of institutions, some have dress code, some do not have dress code, some, even if they have a dress code, they are not very strict about it. When you apply in an institution, you do it knowingly that what is the discipline which you will be required to follow, what is the dress code of that educational institution. Now, till about 25 years back, when these so many private schools had not come into existence, Christian missionary schools were considered as the best institutions. And I have seen children of even my own family. People were so keen to get their children, sons and daughters admitted into Christian schools. And there the girls were required to wear a skirt which is not a normal dress worn in Muslim households. And not just that, I have myself seen these children who were receiving education in Christian institutions, when they sat for dinner or lunch, then they will say, Father, Son, and Holy Ghost. And nobody objected to that. Why nobody objected? Because they wanted their children to receive the best possible education. When you join an institution, you sign on the admission form, you enter into a legal contract, civil contract with the institution that you will follow their discipline, you will follow their dress code. Government has not imposed any ban on any kind of dress. This question in this
although I'm saying this is a conspiracy, but if I use the word controversy, then this question is not really relevant in this controversy. Okay, Arif Sahab, see, the problem is that there were videos that were released of fathers asking their daughters not to attend school because the school insisted that they take off the hijab. Now, who do you think is responsible over here for that girl child not getting education? The parent or the school? Because so far the parents feel that the school allowed the hijab and then suddenly changed. So who do you think is responsible for the fact that the girl child will now not go to school? Well, if it is being done in the name of religion, then I can only sympathize with them, because the purpose of the religion is to acquire education. The very first revelation to Holy Prophet was, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Read in the name of God who has created you. That is the first command, first revelation. There is, today the whole thing is being presented as a conflict between religion and education, whereas the purpose of religion is to make man pursue the knowledge from cradle. This is the saying of the Prophet. From cradle to graveyard, he has said, Utlubul ilma law kana bisin. In Arabia, China was considered to be the most distant land. And Holy Prophet says that even if you have to travel to China to pursue knowledge, go there. Now China, when he was asking them to go even to China, China was not running madrasas where you will wear a dress of your choice. There is so much emphasis. In Quran, more than 700 times, the word ilm, that is knowledge, the word tadabbur, that is to think about, tafakkur, to meditate, they have been used more than 700 times. And I will just tell you one thing. There is a verse in Quran which says, Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ila sabai kaifa nusibat, ilal ardi kaifa sutiha, which means, do you ever apply your mind how we have created the camel, or for that matter other animals? If it is not an exhortation to study zoology, what it is? Ila samai kaifa nusibat, the space, study the space. Ila ardi kaifa sutihat, how we have spread out the earth for you. If Quran is not asking you to study physics, to study zoology, to study space sciences, what else it is saying? It goes to the extent that it says that even travel is a source of knowledge. If when you look at something, you look the flying bird in the sky, that also you should use it to acquire some knowledge. Religion is for acquisition of knowledge. And let me also tell you one more hadith, where somebody asked a close associate of the Prophet that ma kana sifato ta'abbudihi, what was the special feature of the worship of the Holy Prophet? And the reply given was, Ujiba bi anna zalika bit tafakkuri wal etbar. His prayer and worship consisted in knowing the nature of things, in meditating upon things, in reflecting about things. There is so much emphasis. Now people are presenting as if there is a conflict between education and religion. This is most unfortunate. I really sympathize with them. And this is happening because there is total ignorance. I wish that they try to learn whatever they want to do
They try to learn from the book in whose name they are taking their wards away from educational institutions. I really sympathize with them. All right, Arif Saab, thank you very much for joining us for what you feel on the hijab controversy. Okay, let me take a short break at this moment. And after the break, my colleague Anjali is going to join you from Battleground Punjab. But Anjali, I must tell you, in Kanpur, there's a bit of bhangra happening in the background. And my home state tends to beat Punjab hands down in political importance as far as elections are concerned. So I don't envy you for being in the land of bhangra. Well, I am in the land of bhangra, but I am sort of right now busy with the samosas as well. But after the break, what we're going to bring you is the mood and the flavors of Chamkaur Sahib, which is the constituency of the Chief Minister, as Bhagwant Mann parades through it. So we're going to take a short break right now. I'm Anjali Istwal, you're watching NDTV, and we are at Chamkaur Sahib, the constituency that's been represented by the Chief Minister, Charanjit Singh Channi, for the last 15 years. And as you can see around me, the mood and the flavor of the constituency today is a little different. It is not Channi flavor, it is Bhagwant Mann flavor. And the reason for it is that Bhagwant Mann is parading and showing his strength in the stronghold of Charanjit Singh Channi. But Charanjit Singh Channi has been busy with some other things, it seems. He was doing a roadshow today along with Priyanka Gandhi Vadra, and it seems he lost control on his tongue. Or maybe it was intended as he referred to the people from UP as Bhaiye. Oh, bhai, Punjabiyan di roh hai Priyanka Gandhi. Saadi Punjaban hai, Punjabiyan di bahu hai. Ek nahi tagde ho ke ek paase ho jao Punjabiyo. Ye jehde UP de, Bihar de, Delhi de bhaiye aage se raaj karne na bada nahi karna. ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो वो भी तो भैया हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी भी अंग्रेजों की नीति फूट डालो राज करो इसी पे चल रही है। ये बात बहुत ही शर्मनाक और दुखद भी है। उनको पता होना चाहिए कि भारत एक संघ है और फेडरल सिस्टम से चलता है। बिहार हो, यूपी हो या कोई राज्य हो, सारा भारतीय एक है। सबसे दुखद स्थिति क्या है कि इस तरह की बात कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जाए और गांधी परिवार की एक सदस्य वहाँ मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं और तालियां बजा रही हैं। इसका मतलब कि चन्नी की बात का समर्थन कर रही हैं। तो सबसे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। And while we are at Chamkaur Sahib, it seems there are many things in Punjab which are making the headlines. One such thing was the Bhaiye comment that we just showed you and the reactions to it. Let's go straight across to Muhammad Ghazali, who's been keeping a keen eye on the Punjab politics. Ghazali, it seems today the Chief Minister during a road show used a term which might not be palatable for many in UP, and the face of UP was sitting right next to him. See, in Punjab, since the model code of conduct has been imposed, every day the dynamics, the narrative has been changing. It started off with who is Aam Aadmi, who is Garib Aadmi, who is a poor man, who has risen through the ranks. Then the ED raids happened, then Aam Aadmi Party took that issue that Channi is a corrupt CM. Then illegal mining issue came in, and as we near the Punjab polls, this another issue has cropped up. Now, Charanjit Singh Channi is saying that particular word
or slur used for people who are migrant laborers in Punjab. And Priyanka Gandhi is standing beside her in that roadshow yesterday in Ropar district, and now Aam Aadmi Party picking it up on that very issue. But what I have observed in the last 10 or 20 days, that every day situations keep changing, narratives keep changing. It started off with the PM security issue last month on January 5th when Prime Minister Modi had to return from there, and now even he is using the same security, national security issue, border security issue in his speeches. He did it today, day before yesterday in Jalandhar. He spoke about national security issue in Pathankot, which is a border district. So there is no one permanent issue on which most of the parties are contesting the polls, but one issue which is common, which every political party has been raising, is this, that Punjab is a border state. This border state narrative has been used by BJP, has been used by Amrinder Singh. Even Congress's Rahul Gandhi yesterday mentioned it, that if you won't find a leader sharing house with a terrorist, but you will find it with the Aam Aadmi Party, referring to Kejriwal's stay 5 years ago into an ex-militant's residence in Moga district. So we'll have to see that how long does this pay up for Aam Aadmi Party, this entire narrative of being outsiders in Punjab, because it perhaps didn't work last time. Though Aam Aadmi Party lost the elections, but that one reason was not the main issue on which they had lost. So we'll have to see that which particular issue hurts which party and who gains out of what narrative. Right, absolutely. And it seems that the PM honed his attack today when he was doing a rally at Pathankot. Thank you very much for speaking with us, Ghazali. We're going to take a very short break now, but we are at Chamkaur Sahib, and I'll be speaking to all these people who are over here, who are the voters and the residents of Chamkaur Sahib. And they will also give me a reaction as to why there is so much excitement for Bhagwant Mann when this is Channi's turf. A short break now. Welcome back. You're watching NDTV and I'm Anjali Istwal. We are at Chamkaur Sahib and I have some voters over here. Let's speak to them and find out how excited are they for Bhagwant Mann's parade and why. Sir, Bhagwant Mann तो बाहर के हैं, चन्नी साहब आप लोगों के साथ के 15 साल से, तो ये इतना एक्साइटमेंट में जो मैं देख रही हूँ वो किस लिए? भगवंत मान तो हमारे हमेशा दिल में रहते हैं। अच्छा। छोटे छोटे होते थे हम थोड़ा साथ थे, कॉमेडी करते थे। कौन कहता है बात के ये वो यहीं के हैं। तो चन्नी साहब को भूल जाएंगे अब? लगता तो यही है। तो चन्नी साहब इधर को थोड़ा है। चन्नी साहब आप लोगों के दिल से भी उतर गए, यूथ के भी? हाँ जी मैडम, ये तो सिरे दे चोर ने चन्नी साहब। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਰੇ ਇਹਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ ਮੁੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ। ਅੱਛਾ ਰਾਈਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਇਹਦੀ ਹੈ। ये कहता 1 करोड़ 69 लाख का मालिक है। चलो वो पैसा उनके पास कितना वो छोड़िए, काम उन्होंने यहाँ नहीं करवाया था क्या? नहीं किया, सिरे दे जुमले हैं, सिरे दा चोर है। आप बताओ काम किया चन्नी साहब? जी बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए आप बताइए, इतने साल से 15 साल फिर क्यों वोट दे रहे थे उन्हें? मैडम ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ 20 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਲੇ, उन्होंने कख नहीं कराया चमकौर साहब का। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ पहले। आप बताइए, एक सेकंड, आप तो बहुत साल से हैं, तो फिर क्यों बदलाव आ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ गई, उधरों बदलाव आई गया। नहीं तो बदलाव तो ठीक है, लेकिन भगवंत मान क्यों? ਅਸੀਂ भगवंत मान पंजाब का बंदा है, हमारा बंदा है, ਅਸੀਂ भगवंत मान के ही बंदे हैं। आम आदमी पार्टी तो बाहर से आई और अभी नई आई। नहीं नवी नहीं आई है। अच्छा, भगवंत मान तो पंजाब का है, जे उत्थे भविख हो रहा है ताही आम। तो जब चन्नी साहब की परिवार यहाँ पे था, कल कैंपेनिंग कर रहा था, इतना ही शोर शराबा था? इतना ही चलता है। जानी जेड़ा भगवंत मान है वो पंजाब का बंदा है, किते इंडिया बाहरले मुल्क का नहीं है। केजरीवाल जो दिल्ली में काम करे है, पंजाब उसका काम देख के चलिए लगता है, it seems like that people over here are excited about Bhagwant Mann coming here. We've been following him and there's a whole line of tractors, buses, people in cars that are waiting for him to come.